Smriti Shah. Okay, I will take your chemistry subject and chapter number 1 solid state. And last lecture में previously खत्म किया था. Okay, and now we will start closed packed structures topic. Okay, उसके पहले जो था वो था कि how many types of means lattice cell, then FCC, BCC and end center. That's why in these three, how many total number of atom present in FCC, BCC and end center, वो भी मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से फिगर से एक्सप्लेन कर दिया था. Okay, that's why we will start new topic. Topic name is closed packed structures. Okay, then closed packed structure. Closed packed structures. Okay, and these closed packed structures divided into total 3 types, and these closed packed structures present in 3 dimensions. Okay, why 3 dimensions? Because you know, suppose this one is our one simple cube. Okay, and here 3 axes are present and denoted by x, y and z. That's why these closed packed structures, okay, totally depend on these 3 dimensional structures. And first one is 1 dimension, second one is 2 dimensional, and third one is 3 dimensional. Okay, and this one is 1 dimensional. Here word present 1 dimensional. 1 dimensional means what? Means constituent particles. Suppose atom are present, then one atom attached with another atom by linearly. See, okay, that's why this one indicated 1 dimensional. Why? Because one atom attached with another atom by linearly. Okay, and see here what present 1 dimensional, and 1 dimensional coordination number is blank. Coordination number means what? Okay, means one atom attached with another. How many atoms? Okay, means one atom. Suppose this one is one atom. Okay, this one atom attached with nearest by this atom means middle में one atom, उसके लेफ्ट राइट अपर लोअर कितने एटम अरेंज है नजीक में. ओके, नियरेस्ट एटम टोटल हाउ मेनी प्रेजेंट, एंड दिस वन इंडिकेटेड कोऑर्डिनेशन नंबर. सपोज वी टेक this one is one atom. Okay, middle one, and this middle one atom attached with left side one and right hand side second one. Okay, that's why this middle one atom attached with these 2 atom. Why? Because 2 atom present in near. Okay, nearest atom considered in coordination number. That's why easily calculated coordination number. That's why 1 dimensional coordination number is 2. Clear? And 1 dimensional coordination number is 2. Now 2 dimensional. 2 dimensional divided into 2 types. बट उससे पहले मैं ये 1 डायमेंशनल एक्सप्लेन करती हूँ 1 मॉडल के साथ. ओके, सपोज दिस वन इज एटम. दिस all atoms
अटैच विथ ईच अदर बाय लिनियरली, एक ही लाइन में एक दूसरे के साथ अटैच है, सी, ओके। देन दिस वन इज सपोज मिडल वन एटम and this middle atom attach with another two atom. Why? Because consider nearest atom or neighboring atom. That's why this one indicated one dimensional and its coordination number is 2. ये लो तो 1 and 2. Suppose ये वाला लो तो this one is middle atom and attach with this one is 1, this one is second. That's why coordination number is 2. Okay, now we will start two dimensional. Two dimensional total divided into two types. First one is square planar and second one is hexagonal closed pack. Okay, square, here word present square. Square तो आप लोगों को मालूम ही है कि उस तरह से कुछ बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, square. But how to attach these constituent particles or atoms? Okay, suppose here constituent particle or atom attach with each other by horizontally and vertically. See, one atom, second atom, third atom, fourth, means all atom attach with each other by horizontally and vertically same. Okay, and easily formation of one square. That's why, see, suppose ये हम लोग लाइट कर लेते हैं कि A type A why A present, because these all are present in same types of atom and attached with each other. Okay, and this square planar coordination number is, suppose this one is middle atom. Okay, middle one atom attached with another 4 atom, and that's why its coordination number is 4. Why? Because this one is middle atom. Okay, attached with 1, 2, 3 and this one is 4. Nearest total how many atoms present, and this one indicated its coordination number and its type is AAA type. Clear? Suppose मॉडल के जैसे हम लोग एक्सप्लेन करना कुछ चाहते हैं तो घर पे आप लोगों के घर पे सभी लोगों के घर पे कुछ बॉल जैसा कुछ होगा ही. ओके, तो ऐसा कुछ लिनियरली अरेंजमेंट करो. लिनियरली अरेंजमेंट करोगे तो पहला मीन्स ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, अटैच विथ ईच अदर. ओके, एक के ऊपर ही दूसरा रख के हम लोग देख सकते हैं कि कुछ ऐसी फिगर भी फॉर्म होती है 1, 2, 3 and 4 में स्क्वायर जैसा कुछ इजीली आप लोग देख सकते हो. तो फर्स्ट 1, 2, 3 and 4, सेकेंड में भी 1, 2, 3 and 4 and लास्ट में भी 1, 2, 3 and 4. That's why this square indicated square planar and its coordination number is 4. Next, उसके बाद जो आता है वो क्या है, हेक्सागोनल. हेक्सा, ओके, टोटली वर्ड पे डिपेंड करो. स्क्वायर प्लेनर स्क्वायर जैसा कुछ आएगा. हेक्सा मीन्स टोटल 6 हेक्सा वर्ड प्रेजेंट. हेक्सा के ऊपर से ही आप लोग इजीली लिख सकते हो कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6. Okay, then how to draw figure of hexagonal? Then suppose all atom, first layer, all atom attach with each other by linearly. Okay, then second layer, this one, suppose second layer attach होता है यहाँ जो गैप होती है वहां पे. ओके, और दूसरा यहाँ के गैप में, तीसरा यहाँ के गैप में. इस तरह से कुछ अरेंजमेंट होती है. क्लियर? कुछ इस तरह से. फिर से सेम लेयर, तो हम लोग इजीली इसको बोल सकते हैं कि A, दिस वन इज B
This one is A type. Why? Because see, पहली जो रो थी वही से थर्ड वन है. That's why A लेट किया फर्स्ट रो को, तो थर्ड रो को भी हम लोग क्या लेट करेंगे? A. Now second row denoted by B. That's why here this one indicated B type. Okay, means second and last fourth one indicated B type. And see here hexagonal word present. Hexa means what? This one is suppose central atom. Okay, one, and this central atom attached with another 6 atom means nearest atom like 1, 2, 3, 4, 5 and this one is 6. Nearest, neighboring total how many atom attached with this central atom? That's why easily formation of this one is hexagonal, means like benzene type structure. 6 atom attached with each other means benzene. आप लोगों को मालूम ही है, कुछ इस तरह से आती है. टोटल इसमें 6 एटम प्रेजेंट होते हैं. ओके, ये कुछ में खड़ी बेंजीन रिंग जैसी है. अब इसको हम लोग थोड़ा इस तरह से ड्रॉ कर दें तो आप लोगों को इजीली मालूम पड़ जाएगा. ओके, एंड हियर प्रेजेंट सेंट्रल एटम. दैट्स व्हाई दिस सेंट्रल और मिडल वन एटम अटैच विथ अनदर 6 नेबरिंग एटम, nearest atom. That's why its coordination number is 6. Clear? And last one is 3-dimensional. 3-dimensional figure means एक लेयर जो है उसके ऊपर दूसरा तीसरा ऐसा अटैच होता है. एंड फॉर्मेशन ऑफ 3-dimensional क्यूब मैंने अभी ड्रॉ किया था. 3-dimensional मीन्स लाइक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस से डिनोट होकर जो क्यूब का फॉर्मेशन होता है. क्लियर? तो उसमें जो होगा कि ए बी सी टाइप, ए बी टाइप उसका फॉर्मेशन होगा. तो मैं आप लोगों को कुछ फिगर ओके यहाँ पे दिखाती हूँ. सी दिस वन इज फिगर ऑफ 1-dimensional. Okay, and in 1-dimensional see first suppose ये लेट कर लेते तो one atom attached with another neighboring or nearest 2 atom. That's why its coordination number is 2. Clear? Same for this side atom. This one is middle one attached with another 2. That's why coordination number of 1-dimensional is equal to 2. Clear? Now second one. Second one means square packing. Okay? Square packing means 2-dimensional closed pack structure present. And 2-dimensional का सब टॉपिक फर्स्ट वन इज स्क्वायर. स्क्वायर मीन्स सी दिस ऑल एटम अटैच विथ ईच अदर बाय वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली. वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली मीन्स सेम साइड आप लोग देख सकते हो अच्छी तरह से स्क्वायर जैसा कुछ फॉर्म होता है. दैट्स व्हाई दिस वन नॉन एज स्क्वायर पैकिंग. एंड दिस वन इज सपोज मिडल वन एटम. Okay, and this middle one atom attached with another neighboring or nearest 4 atom. Clear? See, and that's why its coordination number is 4. Clear? Now third one is hexagonal. Okay, 2-dimensional closed pack में second क्या आता है? Hexagonal closed packing sphere in 2 dimensions. See, this one is A or B layer, and when first row attached with second row, then between 2 atoms one gap or distance gap present.
Okay, that's why this B layer attached with A layer by this type, like B A A, either A B A B. Okay, and A B A B. See, first and third layer same, second and fourth layer is also same. And suppose this one is central atom, and this central atom attached with nearest or neighborest total 6. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. That's why formation of like hexagonal, and its coordination number is 6. Okay friends, how to calculate coordination numbers मीन्स मैंने अच्छी तरह से आप लोगों को कैलकुलेट करने का सिखाया. हाउ टू कैलकुलेट कोऑर्डिनेशन नंबर, दिस वन इज अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट. ओके, थोड़ा बेसिक है वो आप लोग को अच्छी तरह से समझ लो. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कैसे कैलकुलेट करें, तो एग्जाम के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर. ओके, मीन्स ये जो था क्या था, हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट जो है वो है क्या, लास्ट हमारा था थर्ड टाइप 3 डायमेंशनल 3D इफेक्ट. ओके, 3 डायमेंशनल मीन्स व्हाट, सपोज सी दिस वन इज 1 एटम, one row, second row, third row attached with each other, and उसके मीन्स आप लोग इधर भी देख सकते हो कि all atom attached with each other by 3 डायमेंशनल. लाइक हम लोग कुछ इस तरह से अक्सियल ड्रॉ करते हैं. ओके, एक्सिस मींस x, y and z, and these all atom attached with by 3 dimensional in 2 dimensional square packed layers. Okay, 2 dimensional square pack closed layer means what? This one is square closed pack and attached with another layers of square closed pack layer, and formation of 3 dimensional like these 3 axes denoted by 3 dimensionally, and formation of easily, this one is the most popular lattice or cube like. Okay, means one atom, second atom attached with each other, and easily formation of this one is a cube. And suppose here z axis, here x, here y, and easily formation of 3 dimensional closed pack. Okay friends, थैंक यू. नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. ओके.